Hello, all of you. Hi, this is Rakesh here from Bollywood Flash. आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम लगातार सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू कर रहे हैं लॉकडाउन में और आपको एंटरटेन कर रहे हैं। और सबसे पहले बताइए कि आप लोगों का लॉकडाउन कैसे जा रहा है। हाय उषा जी, कैसे हैं आप? भुवन जी, हाय। लॉकडाउन मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत प्रोडक्टिव जा रहा है। मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू कर रहा हूँ और आप लोगों को ये उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो उनका लॉकडाउन कैसे स्पेंड कर रहे हैं और आप तक उनकी बातें पहुँचा रहा हूँ। हाय मीत कौर, ब्लॉर बॉन्ड, उज्ज्वला, हाय। सो आप लोग बताइए आप लोगों का लॉकडाउन कैसे जा रहा है। आज हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ज्वाइन करने वाली है जिनका नाम है नित्यामी शिर्के। उनको आपने जो है नच बलिए 9 में देखा होगा। ओल्ड बालाजी पे एक वेब सीरीज़ आई थी मेडिकली योर्स, उसमें देखा होगा। और बहुत सारी वेब सीरीज़ है जिनमें वो आगे भी आपको नज़र आने वाली है। और वो एक्टर है, मॉडल है, डांसर है बहुत ही बेहतरीन। तो वो बहुत सारी चीज़ें करती है और आज हमें यहाँ पे ज्वाइन करने वाली है इस लाइव में और हमें बताने वाली है कि उनका लॉकडाउन कैसे जा रहा है, वो इस लॉकडाउन का कितना पालन कर पा रही है और फैमिली के साथ वो कैसे टाइम बिता पा रही है। हम उनसे जानने वाले हैं अभी थोड़े टाइम में। अभी वो ज्वाइन करने वाली है हमें, तो तब तक आप लोग अपने सवाल रेडी रखिए सो दैट आप लोगों के सवाल मैं उनको पूछ सकूं। और जैसे कल शांतनु ने कहा था कि वो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाले हैं बीच में, लेट्स सी अगर उनको टाइम मिलेगा तो वो हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। सो आप लोगों के जो भी सवाल है यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सो दैट मैं नित्यामी को पूछ सकूँ। सो आई गेस नित्यामी इज़ हियर, मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ। हेलो, हाय। Hi. हाय। Hello. हेलो हेलो हेलो। सुनाई या दे आई रहा है? कैन हियर यू बट थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम है आई गेस। हेलो। There. Better? Sorry. या Reception थोड़ा फाइन, गॉट खराब इट। है। हाँ, अभी आई थिंक नहीं नहीं नहीं, अभी आई प्रॉब्लम। थिंक इट्स फाइन। हाँ हाँ सो ओके हाउ आर ठीक है। यू एंड हाउ वाज योर हाय क्वारंटाइन गोइंग ऑन? गुड। सो Quarantine is good. It's good. I mean कुछ ना कुछ हो रहा है. It's a good I think it's a good period for us all sort of to take. I mean how often does this happen, right? कि like the whole world राइट। literally stops और तुम्हें थोड़ा time मिलता है just to be with yourself. So I think it's important. I think it's important for everyone and it's doing wonders for our environment. So yeah. So it's सो going well so far, quarantine. दिन का शेड्यूल कैसे रहता है, मतलब मतलब हाउ यू प्लान योर डे, लाइक यू कैन शेयर समथिंग अबाउट दैट। Um, I am a generally very physically active person, तो मेरा दिन हमेशा एक वर्कआउट के साथ शुरू होता है, चाहे वो कुछ भी हो, वाओ। even if it's just dancing in my room, I have to do something. So I'm just recovering राइट। from I'm still kind of recovering from नी my इंजरी। knee surgery. So yeah, my knee injury. So राइट। I still can't do, मतलब I can't run, I can't jog and things like that yet. But yeah, my day always starts off with a workout, and then uske baad it sort of it depends, it alternates depending on agar kuch kaam ya kuch ho, I'll try and read, write. I start writing, so wo राइट। or watching like catching up on movies, watching some old movies, ऐसी सब चीज एंड फैमिली के साथ टाइम. तो आई एम राइट। लकी कि मैं फैमिली के साथ हूँ, तो वो भी हो सकता है. थोड़ा बहुत कुकिंग ऑल्सो. सब राइट। मास्टर शेफ सो बन गए क्वारंटीन में. राइट, सो आपके आने से पहले मैं ऑडियंस को बता रहा था कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर रही है, जैसे मॉडलिंग भी करती है, आप एक्टिंग भी करती है, आप बहुत अच्छी डांसर भी हैं। और ऑडियंस को अगर पता ना हो, आपको नी इंजरी हुई थी नच बलिए 9 में, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा मतलब सीजन आपके लिए अच्छा जा रहा था लेकिन हाँ. नी इंजरी के बाद थोड़ा सा सैड हो गया था। लेकिन नेवर यस. माइंड, मतलब बहुत सारी चीजें और आनी बाकी है आगे। वो तो है ही, वो तो है ही. और हमने पूरा सीजन आई डोंट नो कैसे बट नी इंजरी के साथ हमने कर लिया. राइट। बिकॉज लकीली वी हैड अ ग्रेट टीम एंड समहाउ हमने मैनेज कर लिया जो भी, क्योंकि मेरा इंजरी फर्स्ट वीक में ही हो गया था. तो हमारी राइट। फर्स्ट परफॉर्मेंस से पहले ही इंजर हो गई थी मैं. तो हमें लगा कि सेकेंड वीक मतलब आउट फॉर श्योर. तो पता नहीं, हर वीक हमारे लिए एक अलग चैलेंज रहता था बिकॉज हमें लगता था कि हाँ ये वीक एंड समहाउ हम द फैक्ट कि हम फिनाली तक पहुंच गए डिस्पाइट दैट, मेरे लिए वो एक बहुत
बड़ा विक्ट्री था, एंड आई थिंक सबके लिए, आई थिंक तो इट वाजंट अबाउट विनिंग हमारे लिए, इट वाज जस्ट टेकिंग ईच वीक एज इट कम्स. एंड शांतनु तो या कैसे सपोर्ट करता था आपको? शांतनु बहुत ही स्वीट था, ऑलवेज. ही इज बीन वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द स्टार्ट. आई थिंक उसे पहले से ही पता था कि दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन टीवी, फर्स्ट टाइम डूइंग अ रियलिटी शो, फर्स्ट टाइम डूइंग ऑल दीज थिंग्स. तो he was very supportive and very sweet and always made sure कि मैं comfortable हूँ, and he would answer मेरे सारे stupid questions, सब कुछ. तो very sweet. So whose idea was it to take on another level, like on TV together? It was both. It was a mutual decision. We both spoke about it together. So we had just started seeing each other. So it was obviously a bit of a scary decision क्योंकि you're putting yourself out there से public में, you know, उसने कभी ऐसे नहीं किया था, मैंने कभी ऐसे नहीं किया था. हम दोनों काफी Right, private लोग हैं वैसे. So right, right, it was a yeah, we discussed it. We discussed it with our families, and then we made a decision साथ में. So right. yeah. टॉकिंग अबाउट योर करियर, बहुत मतलब छोटी उम्र से आपने करियर की शुरुआत की थी. सो हु इज योर इंस्पिरेशन एज एन इन योर करियर एंड इन योर लाइफ? Um, तो I acting मैंने actually I had never thought कि मैं acting में चली जाऊंगी और entertainment industry में I will be here and doing this. राइट, But I think initially when I got into it, I realized how passionate. क्योंकि मेरे like whole life I think I've loved performing, I've loved being on stage, I've loved dancing, and थोड़ा बहुत school में जो musical drama वो सब क्या I used to love. तो बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक करियर बन सकता है. आई एक्चुअली ग्रेजुएटेड इन बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, सो आई मेजर इन साइकोलॉजी, एंड आई थॉट कि वो ही हाँ, मतलब एकेडमिक स्ट्रीम में कुछ करूंगी मैं. बट मैं बॉम्बे आई आफ्टर माई ग्रेजुएशन, एंड आई डिडंट नो व्हाट आई वांटेड टू डू, and I was थोड़ा सा lost, and then I got a job here, and then I started working, and then I did a few other jobs, then I started auditioning, and then हाँ, acting, and then my first project PM Selfie Wali happened. So वहां से it sort of took off. And I think when I राइट. met my director and I worked on set, और वो actually वो 7-8 महीना I think we worked on that show, and the whole process of it I fell in love with. So that's when I realized कि मुझे ये full time करना है for sure. So yeah, Right, that's right. how it began. Yeah. And tell us about your first experience in web series. How was it, and कितने supportive थे, especially directors and the other actors? Um, my first experience अच्छा बहुत अच्छा था, I would say. I was very lucky कि मेरा first experience was such a great experience. मैंने बहुत कुछ सीखा. I had a great, it was a full female team. Female director. Ekta had, of course, Ekta is like the head of it all, and the show is also about like surrounding a female protagonist. तो Right, बहुत ही fun था, and I got to learn so much. I had to change. I had to really transform myself because initially I remember जब मैं आई थी, तो because they had been auditioning for a long time, 3-4 महीने से audition चल रहा था और lead लड़की मिल ही नहीं रही थी, तो everyone was थोड़ा सा frustrated. I remember my director was frustrated. So when I came in and I first came into the office to see her, तो actually audition जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, मैंने audition दी थी, and Ashma had told me कि we can't cast you until like as in I'm not sure of you until like you come to India and I see you और आमने सामने workshops हो and all of those things. So I was sort of put on right. a probation period. तो मुझे weight loss करना पड़ा, मुझे मेरा first time in my life I had to dye my hair. I Oh, kid you not, मैंने कम से कम 400-500 costume changes styles किए ooh, होंगे, 3-4 makeup artist hair stylist change हुए. It was crazy. और हमने 3-4 महीना just workshop and mock shoots किए थे before we actually yeah, went on set. तो it was right. a big transformation. तो लोग मुझे अभी भी बोलते हैं you must be like that in real life also ना, जैसे वो character थी, but मैं नहीं हूँ. Actually मैंने काफी काम Right. किया to मेरा bring that मेरा नेक्स्ट character. सवाल वही था. हाँ तो yeah, so it was a crazy experience. No regrets. I'm so happy कि I got वो experience. Thanks to Ekta ma'am, thanks to Ashma. It was amazing. Yeah. If I'm not wrong, it's Tanya. Your character name is Tanya, Yes, right? yes, Tanya Thakur. Yeah. So how is it different from your character, like on your real life character? My real life character, well, I guess मैं भी बहुत काफी talkative हूँ और वो भी talkative है. I guess that's the only thing I can think about. We're both positive people, but नहीं तो I'm very different. Like she's a full blown fashionista, like trendy. I would not consider like I'm not a fashionista. मैं ज़्यादा I'm not into makeup and कपड़े इतना सारा. Like I believe fashion is comfort. और जो तुम्हें what you feel best in.
where she's more Right. glam and she's more out there and she's much more confident and in your face, you know, and Right. थोड़ी सी ditzy भी है, थोड़ी सी blonde है, but in a sweet way. So Right. I think Right. those are all the differences हमारे बीच में, but the positivity is there हम दोनों में, I think. Right. Yeah. So you did this, and thereafter this one medically yours, and then Najbaliya 9. Yes. So PM Selfie Valley, then Medically Yours, then Najpali and I. Yeah. So Yeah. you met first time on set of Medically Yours, Shantanu. So I met yeah. So hum actually I remember the first instance that I met him was जब हम हमारा costume trial चल रहा था, and I had just been finalized for the role and I'd asked sir कि who's the male lead. So he'd said, you know, Shantanu, and I didn't know, मुझे नहीं actually, because मैं टीवी भी नहीं देखती थी, अभी भी Right. कुछ नहीं देखती हूँ, तो मुझे नहीं पता था, बट मॉम को पता था, तो मॉम एक्चुअली मॉम ने बोला अरे शांतनु you're working with Shantanu, तो I'm like कौन है? So then I found out Wow. about him, and then I didn't know. I think I was the only person who didn't know who he was. So then I met him. हमारा costume trial चल रहा था, उसका कहीं और चल रहा था, मेरा कहीं और चल रहा था. And we were like passing each other. And I think the creative or someone who was there introduced us and said, okay, you know, this is Nityami, she'll be playing Nivedita. This is Shantanu, he'll be playing Abir. So that's how we met, and it was a very like बहुत ही awkward. हाँ, hi, okay, ठीक है, bye. And then workshops में भी हमने like 3-4 दिन workshop किया. We barely like hardly कुछ interaction हुआ. But I think हमारा proper interaction हुआ on set when we were working together. And हमारे obviously most of the scenes were between me and him. So हमारा vanity a lot of the times they would keep साथ में. So I remember after a particular scene, finally, I think 2-3 हफ्ते के बाद shoot के बाद हमारा जो door रहता था वो finally खुल गया, and we started talking to each other, and that's how we got to know each other. But And he's also kind of shy and all. he's very shy. He's so shy, and I'm also like I'm not like मैं talkative हूँ, मैं उससे ज़्यादा talkative हूँ मैं. But मैं भी मुझे भी थोड़ा time लगता है to like open up. So both of us would be थोड़ा like initially, you know, like आते थे तो he'd be like, are you okay? I'd be like, yeah, I'm fine. Like, am I doing this right? So it was very funny, but it took us both some time. But that was the beauty of it, our relationship. कि the way we got to know each other, it was very sweet. Right. So yeah. Right. नजबलिया 9 में जब इंजरी हुआ, सो उसके बाद उन्होंने कैसे सपोर्ट किया? लाइक ऑलरेडी यू आर इन अ बिग शो एंड देन इंजरी होना, और आगे बहुत सारे परफॉर्मेंस ऑलरेडी आने वाले थे, तो वो टाइम पे क्या Yeah. क्या चल रहा था आपके दिमाग में स्पेशली? आई थिंक हम दोनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर था पहले से ही, बिकॉज शांतनु एक डांसर है, तो पहले से एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई थे. सो बाय डिफॉल्ट मेरे भी एक्सपेक्टेशंस हाई थे, बिकॉज ही इज अ डांसर, तो नित्यामी को तो मैच अप करना ही है, राइट? बट ही वुड नेवर पुट दैट प्रेशर ऑन मी. ही जस्ट से तू जितना कर सकती है कर, बट डू योर बेस्ट, वर्क हार्ड. एंड Right. वी बोथ अग्रीड ऑन दैट थिंग. हम हमारे बीच में हमेशा इट्स वर्क हार्ड एंड यू डू योर बेस्ट. So I was fine with doing that, but when this injury happened, it was like I don't know. It was really sad. Like मुझे बहुत खराब लगा because the whole team had been working. हमने 2 हफ्ते पहले ही थोड़ा बहुत शुरू कर लिया था training, rehearsals, practice. The team had come up with ideas. काफी सारे हमारे team members ने दूसरा कुछ काम छोड़ दिया था इसके वजह से, शो के वजह से. तो मुझे overall बहुत खराब लग रहा था कि first ही week में ये हो गया, and then but I think the reason that I was able to do it was because of the support that Shantanu gave me. Yeah. So, and that I got from my team, and also, obviously, खुद को भी थोड़ा credit देना पड़ेगा. काफी मुश्किल था. It was a bad injury. हमें, I still remember first week में मैंने push किया pain killers. First performance तो pain killers लिया, Enzoflan लिया, tape किया, कुछ भी करके करना ही था, तो मैंने कर लिया. फिर उसके बाद 3-4 दिन में जब ठीक नहीं हो रहा था, I finally got a scan done, और we went to 2 of the best surgeons, Dr. Pardiwala and Dr. Anand Joshi, and दोनों का कहना था कि I should not even be walking. They said कि अगर तुम्हें हाँ, पर Dr. Pardiwala तो another friend of mine had an ACL injury, and he tore his ACL. तो Dr. Pardiwala ने उसे कहा था कि okay, you can at least keep a brace and dance. But मुझे he saw my scans and he said कि no, he said try भी मत करना, because he's like अगर तुम्हारा meniscus और rip हो गया, तुम्हारा recovery time will be longer. It's very dangerous, especially because you're young. You have your future ahead of you. Don't. He's like, try भी मत करना. But Still you tried. मैंने किया. So and then I got my surgery done through Anand Joshi, and I spoke to him, doctor, and he told me that look,
it's possible, you can do it, but you have to be very careful. तो वो pressure शांतनु पर भी था. Whenever we would perform, अगर मैं गिर गई, because it's not in a normal situation, so he has to Right. look out for himself and me. मैं गिर नहीं सकती हूँ, कोई भी lifts, catches, कुछ भी, he has to be extra mindful. Both of us. तो वो मुश्किल था. So, but I think he Right. did a great job and we managed somehow. राइट थोड़े से फैंस के सवाल ले लेते हैं. हेलो Sure. मैम, आई एम बिग फैन ऑफ यू. आई लव यू नित्यामी. हेलो हेलो नित्यामी मैम. एंड Hi. Hi. दिस वन इज सेइंग हाउ आर यू स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली. How am I spending time with my family? So my mom, dad actually Australia mein hai, so they are not here. But I stay with my masi, my masa and my cousin who's come now because quarantine. वो गोवा में पढ़ रहा है, but he's here now. So we've just been chilling. We've been playing a lot of board games. I'm learning how to cook. थोड़ा बहुत मासी मुझे सिखा रहे, थोड़ा बहुत parathas and rotis banana finally, finally. So yeah, but it's good. It's good. It's good quality time साथ में. And मासी और मैं रोज सुबह workout भी करते, so we motivate each other. So that's good. I have a workout partner. So yeah, so it's fun. Good. सो अब तक की बेस्ट डिश कौन सी सीखी है आपने, मतलब इन दिस क्वारंटाइन टाइम? आलू पराठा. वाह. मेरा बहुत खराब बना इनिशियली, बट इवेंचुअली जब मैं सीख गई, स्पेशली रोल करना, उसे अंदर डाल के रोल करना. बट हाँ, आई थिंक आलू पराठा. ओके. क्वारंटाइन कैसे चल रहा है नित्यामी? क्वारंटाइन तो आई मीन चल रहा है. चल रहा है, अच्छा चल रहा है. as अच्छा as it goes. How are you connected to Australia? Ishika is asking. I was brought up in Australia. मेरा सारा like पढ़ाई and everything was in Australia. My schooling, uni, college. Auckland. Auckland. I'm a New Zealand citizen, तो हाँ, तो half New Zealand में हुआ and half Australia में my Okay. upbringing. So yeah. ओके ओके. एंड दिस क्वारंटाइन टाइम बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है, जैसे आपने कहा कि मैंने जो है डिशेस ट्राई की है और बहुत सारे लोग वर्कआउट वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं. सो टेल अस अबाउट योर फिटनेस का राज एंड हाउ यू कीपिंग फिट इन दिस क्वारंटाइन, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मोटे होने वाले हैं घर पे बैठ बैठ के एंड ऑल. I know. नहीं, but ये सब excuses है. अगर आपको कुछ करना है तो आप करोगे. मतलब even if अगर आपके पास कुछ equipment या कुछ नहीं हो, तो भी there are ways of staying active. I think ये सारी चीजें जो होते हैं ना, ये excuses होते हैं. अगर आपको कुछ भी चीज करना है ना, तो आप करोगे, चाहे कुछ हो आपके साथ या नहीं हो. Like करना है तो हो ही जाएगा. तो आई बिलीव इन दैट. तो क्वारंटीन में भी इट्स सो इम्पोर्टेंट. मेरे लिए पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब मेरा वर्कआउट हो जाता है. आई लुक फॉरवर्ड टू इट एंड आई फील बेटर उसके बाद. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज एंडोर्फिन्स टू कम आउट जब आप वर्कआउट करते हो, तो वो अच्छा फीलिंग. एंड ऑल्सो जस्ट टू स्टे एक्टिव. सो अगर आपको करना है आप कर सकते हो, कोई एक्सक्यूजेस मत बना, और खाना भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लो. As easy as that. Right. And Bhavesh is asking, how about Baroda? Baroda. I was born in Baroda. So mom and dad were brought up in Baroda. It's my birth town. So yeah, I was born in Gujarat. I'm half New Zealand, half Australian. Wow. But I'm like brought up there. Mom is Malayali and dad is Maharashtrian. So मेरे पापा कहते हैं I know fruit salad, proper mix. I thought you are Gujarati because you born in Baroda. No. We were just brought up there. I'm half Malayali, half Maharashtrian. Papa, I'm a Shirke. So Papa is Maharashtrian, mom Okay. is Malayali. Yeah. Right. Yeah. How was your bond with Shantanu? Great, यार. I mean, मैंने बहुत सारे हमारे इंटरव्यूज देख लो. मैंने बहुत बार बोला है what our bond was like. It was special. It was definitely special, I would say. So yeah. Right. How many years did you live in Australia, Ishika? I lived in Australia for about, I think it was almost 10 years. I've stayed in Australia for almost 10 years. Yeah, long time. Yeah. Right. So, Nityami, इसके अलावा कोई upcoming project, any of your upcoming project you'd like to share with us after this quarantine get over? I honestly, like that question, I think हम सब actors same response दे रहे कि at this point we honestly like we don't know, like whenever quarantine ends, जब भी वो हो, तब I can give you like I can say कि हाँ, but अभी because everything is so up in the air, but
I mean, fingers crossed, कुछ ना कुछ तो आएगा. Hopefully, once this quarantine ends और हम थोड़ा बहुत normalcy resume कर सकते. But Right, abhi ke liye I can't say anything because nothing is sure. So yeah, right, right. yeah. One of the follower is asking what kind of character would you like to play next? I'd love to play a sports person. Oh my god, it's my dream to be in like a sports biopic, something Right. like that, where I get to like physically push myself also. So or like a Who is dance film, even a dance film. who is your favorite sports person and why? My favorite sports person. Um, I like Serena Williams. I would say if I had to pick someone. I think Wow. she's like a force to be reckoned with. Like even after having a child, she's come back and जो भी criticism and whatever's thrown at her, like it doesn't matter. जब वो खेल रही है, Mhm. वो बस खेल रही है. I love that. Right. Actually, I think she's a very powerful woman. So yeah. Lost boy, when you are uploading your quarantine fitness videos. I'll start, yaar. It's just अभी मेरा knee थोड़ा खराब है, so I'm taking it easy. But I think in some time I'll start pushing my knee थोड़ा और, so I'll start uploading things. Will you enter in Bollywood? I mean, I think it's every actor's dream, I think, to enter Bollywood. So, Right. yeah, of course, I would love to. But for me, um, it's about work. It's not Bollywood, yeah, web series, yeah, TV show. It's about Right. काम जो भी Right. मिले, I should really connect with it and I should do my best with it. Right. Right. So, yeah. ऑल्सो आपने पहली बार रियलिटी शो किया एंड उससे पहले आपने जो है वेब सीरीज किया था. व्हाट डिफरेंसेस यू फाइंड बिटवीन रियलिटी शोज एंड द वेब सीरीज? बहुत सारे differences यार. Reality show में your real life is being mixed in with your real life practically. So it's just a whole new experience for me. Personally, I prefer the real life. I prefer acting in front of a camera, whereas reality show में obviously आप जो हो वो दिख जाता है. It's राइट. थोड़ा it pushes you out of your comfort zone. No regrets. It was an amazing experience. And I have more respect for लोग जो reality shows करते हैं, who take part in reality shows, because it's not easy. काफी लोग को लगता है अरे राइट. कुछ भी, it's easy, this and that. They're just being themselves. But there's a lot of things involved. There's a lot of things that happen behind the scenes. There's a lot of pressure. बहुत कुछ. So it's not easy. And yeah, those are the main differences. But yeah, being on set is totally different. It's like you can switch on and off. Right. This girl Ishika is asking so many questions. She's saying, when will Oh, you marry? I knew this question would come. ये कहीं ना कहीं आ ही जाता है ये question. I'm not interested in, honestly, I'm not interested in marriage. It's never मेरे life में, like, I do want to get married eventually, but it's never been a priority. My priority is my work, my family, a lot of other things, but not marriage. So yeah, Right. we'll Right. see. आगे जाके. Right. Amol is asking, how was your leg? How was your leg now? Is it fully recovered? It's not fully recovered. It'll take time. वो तो मुझे पहले से ही पता था. I think when I made the decision कि मुझे show करना है and surgery के लिए नहीं जाना है, because if I had gone for surgery straight away, I would have obviously been थोड़ा better Right. off. But क्योंकि मैंने वो decision लिया खुद, it delayed my recovery process थोड़ा, and now it's become worse because अब मैं physio नहीं जा सकती because of quarantine. तो मुझे घर पे खुद करना पड़ता है, which is fine, but Hmm. yeah. So it'll take another, I think, 5-6 months to easily for me to be fully fine. Yeah. Right. Right. Hopefully So hopefully less time. hopefully it will be recovered soon. Yeah. Yeah. And Moksh is asking, what is the favorite thing you love in India? So many things, yeah. I think I fell in love with Bombay straight away. मैं आते ही, like मेरे सारे दोस्त मुझे पूछते हैं कि how have you gone from Australia to India and how do you like stay here? But I don't know. I loved Bombay. I Wow. haven't stayed anywhere else in India as such, other than Baroda, but I was very young. But Bombay, I love. There's a certain vibe, energy. I think that's my favorite thing about Bombay. Yeah. Right. Right. एक last question ले लेते हैं audience से. Huh. Then we'll say bye to audience. Sure. What is your goal in life? What's my goal in life? To be happy. I think above everything else, to be happy and do good work, hopefully, and make some kind of impact world mein, hopefully one day. So yeah. Right.
Lastly, any message you would like to give to audience? It's time to say bye to all. Any Yes. message you would like to convey? I just want to say कि I know this is a tough time for everyone, and I'm sure सबने सुना होगा ये message. I'm sure all the artists are saying this, but it is tough, and especially people who are dealing with certain things, who are stuck in places, who have um, certain mental illnesses. It is a tough time for all of us. But I think hang in there. Hum sab, we're all in this together, and we will all come out of this stronger. I genuinely believe that. So I think it's just a matter of time. And आप जो भी कर सकते हो आप करो, like घर बैठ के like do something. And sometimes some days are worse than other days, but that's okay. I feel like just keep doing, and we'll get there. We'll get out of this. So yeah, it's important. But सब घर पे रहो mostly. Stay in Right, quarantine. please. Yeah, जो Yes, भी आप कर yes. रहे हो घर पे करो. Right, right. So, Yeah. Nitya, lastly, बहुत सारी request आ रही है. हाँ Please हाँ. come live with Shantanu. So, Oh, okay. बोल दीजिए Okay, जो we'll do बोलना है आप. that. We will do that. Okay. We'll organize a live and try and come live that man for sure. Thank you. Thank you so much for talking to us, Thank you. Nitya. Thank Thank you you. so Thank much. you. Thank you Bye so bye. much. Take care. Bye. Bye bye.